Mantri eVidya channel number 1 to 12 and our YouTube channel NCERT official, and I am Kusum Prasad. As you all know, this is our very special session, that is teaching learning intervention for inclusive classroom. Dear learners and viewers, you are seeing that I am sharing my screen with sign language interpreter Ms. Jyoti Gothal. Jyoti, very welcome in this session. So, dear learners and students, as you all know, on the occasion of Learning Disability Week 2022, NCERT is organizing a 6-day online training workshop on specific learning disabilities, SLD. And today is the 6th and last day. So, and today we are going to open this quiz based on this workshop, for which you can submit your entries till 1st of July. And whosoever will score 70% and above will be given a certificate from NCERT. So, dear students and learners, you can participate in today's session through our various mediums. आप हमारे इस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे विभिन्न माध्यमों के जरिए. आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर, टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो है 8800440559, and you can also email us on our email ID that is flashing on the screen. और इसके अलावा डियर लर्नर्स, आप हमारे NCERT ऑफिशियल के लाइव चैट में भी जाकर अपने मैसेजेस और आपकी जो भी क्वेरीज हैं ड्रॉप कर सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट से सीधे इस सेशन से जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं. और तो हम बता देते हैं कि हमारा जो ये क्विज़ जो हम आज ओपन करने वाले हैं वो हम लास्ट में ओपन करेंगे. तो आप बहुत ही ध्यान से इस पूरे सेशन को देखिए, इस पूरे सेशन में बने रहिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी बताइए ताकि वो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें. तो हम आज के हमारे एक्सपर्ट से मिलवा देते हैं. तो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं अरुण फर्नांडिस सर. अरुण सर, very welcome in this today's session. Arun sir is founder managing director DLearners, and our second expert is Ms. Shilpa Rao. Welcome Shilpa ma'am. Namaste. Shilpa ma'am is head AL product TCS. So, and today's topic is living with SLDs, means specific learning disabilities. So, dear learners and viewers, प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दिस सेशंस. एंड जो हमारा जो क्विज़ है वो इस सेशन के बाद में ओपन होगा. 12:30 के बाद ही उस लिंक में आप जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम ये सारी बातें, आप किस तरह से उस लिंक तक पहुंचेंगे, किस तरह से आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह से आपको सबमिट करना है, ये सारी जानकारी हम इस सेशन के आखिरी में देंगे. तो आप पूरे सेशन को ध्यान से देखिए और बने रहिए हमारे इस सेशन में. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है अरुण सर से कि सर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इज मोर प्रिवलेंट अमंग गर्ल्स और बॉयज, और डज इट हैव जेंडर रिलेटेड बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस? अरुण सर. So the first question is very relevant because both the panelists ourselves have dyslexic. So there is a girl and a boy together. So there is no gender equality here at least. It's not about a child having a disability per se. It is more like a difficulty is what I can say. Because here the only gap is the reading writing aspect of a language is a problem, and not anything else when it is particularly SLD. And there is also a problem in maths and other things. But there is no gender divide on this. But it's only at the very right time if we kind of identify such children, equally the boy or a girl, they will be actually coming out in flying colors. As now you see myself or Shilpa ma'am also is well positioned in the society. But both of us have got that privilege to get identified correctly and to be given the right intervention. That's why we are sitting here in front of you. Thank you, sir. My question is same for Shilpa ma'am. Sure. So मेरा कहना ये है कि everybody finds their own way in which they cope up with a certain situation.
And it might be very different in some cases where, boys cope up in a very different way and girls cope up in a very different way. Like for example, many times girls cope it up with being more talkative. So there could be cases where girls that's their coping mechanism, and then teachers would say that you're very talkative, or they would punish them, or they would say kind of get out of the class because you're just talking too much and not paying attention. But that is their coping mechanism to deal with the situation which they are currently facing. So I would say every person has their own way in which they are coping at a child when they are when they're kind of growing up. And ऐसे नहीं है कि वो सीखना नहीं चाहते. It is just a different situation which they are dealing with. So just be kind to them. Yes, ma'am, very right. My next question is to Arun sir. Arun sir, please share your life journey, your life at present with our viewers. Yeah, basically me being a severe dyslexic person, having challenges in reading, writing, and I kind of passed out 7 different schools to complete my schooling, and but though the beginning was a difficult thing, but I did pass 2 master's degree using a scribe and so on. And in the same institution called Loyola, I was a lecturer there. And I managed to kind of work in a multinational company in Hong Kong, and I came back and I started an organization to help identify children with dyslexia or SLD. That's the organization name is DLearners. So all this has happened is just because I had a mother who understood me and not focus on my difficulties or my inability in reading, writing, but she focused on the abilities which I was able to do well. I was a good sports person. I was a district level swimmer, state level athlete, and so on. So in that way, this strengths should be identified more rather than the weaknesses. And they did put me on the right institutions. Today in NCERT, there's a lot of inclusive, help is given. Like for instance, a special educator can identify such children in a very young age itself. So those kind of identification and all can happen, meaning any child can also do well in life. And it is not, since the child is having specific learning disability, the child will be a school dropout or so. It is not so. It can, as me, now I'm pursuing my PhD, every child out there can also have the same potential to achieve in academically and also in a professional life. But all it takes, it begins with the teacher who identifies them very early and ends with the parent who never gives up on them. Okay, sir. Thank you, sir. I'm very happy. We viewers are very happy to know about your achievements, sir. And one thing we want to know that, sir, how the education system has helped in your wholesome development. So today, I think so, past 15 years now, I think so, I've passed my schooling. So at that point, NCERT and NIOS boards and all recognize such students. They did have this medical board certification wherein you can get exemptions and so on from the board, wherein you can get a second language exemption. You can use a calculator in your maths paper, and you can also have extra time, and you can have a scribe for your appearing for your exams. All this is happening, and also in CBSE schools also it's happening, and it's more popular now, I feel. So those kind of things should be adopted by every parent having a kid having such difficulty and not feeling indifferent to those things, and there will be no mark sheet telling you that you are a dyslexic or that sort. There is no fear on that. But this opportunity should be given to all, and parents or the teacher should advocate this, and the parent should accept this, and not as a difficulty, but as a plus for the child to be empowered with other kids to get better and good marks also. Yes, sir. I also want to know from Shilpa ma'am, your life experiences, your journeys and your life at present time. Sure.
So when I was growing up, तभी learning disabilities के बारे में इतना awareness नहीं था. तो तभी the schools and the teachers were not right. They were equipped to kind of diagnose and identify a lot of those learning difficulties at a young age. तो मैं स्कूल में कभी डायग्नोज नहीं हुई थी. There were challenges which typical kids with learning disabilities face, जैसे कि B और D में है, तो B और D लेफ्ट एंड राइट, मेरे को अभी तक लेफ्ट एंड राइट बताना नहीं आता. मेरे एक्चुअली नेल पेंटेड है ताकि मैं लेफ्ट ये है बता सकूं. और थिंग्स लाइक रीडिंग आउट लाउड वाज आल्सो अ बिग चैलेंज. लाइक जैसे स्कूल में बैठते हैं बच्चे, एक के बाद एक बात करो आप, मतलब एक पैराग्राफ रीड करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला रीड करो. तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी, मेरे तो पैर कांपने लग जाते थे. So what I used to do is that I used to memorize. So what I found out that I could memorize a lot of things rather than understand and do. So I used to wake up early in the morning, and my mom used to read me the lesson, and then I used to kind of just memorize. And this I'm saying in like very early in my childhood, like senior KG, first standard, वैसे वाले. So it kind of went on there. Maths was again a very difficult one. I really struggled with it. But what I found out later is that I loved painting and drawing. So I used to color all the formulas. I used to color my entire math book. So my math book was more colorful than my drawing books. And that helped me to kind of cope up with a lot of things as I was going through my childhood. And that really helped me to kind of experiment with things so that I could find out what is working for me, what is not working for me. So when it came to choosing my career, what happened was art was a natural choice. And मैंने काफी सारे आर्ट के एग्जाम्स भी दिए हैं. मैं जब दे रही थी तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ी बोर हो रही हूँ उसके से. बट आई फेल्ट कि मैंने बचपन से आर्ट से काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, और मेरे को साइंस परस्यू करना चाहिए जिसमें मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिले. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग, एंड देन मेजर्ड इन एआई, एंड आगे की मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई. एंड लॉट ऑफ लोगों को लगता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज काइंड ऑफ गो अवे विद टाइम. तो ऐसे नहीं है. इट इज समथिंग which stays with you lifelong. It is just that you are able to manage it better. And इसमें it is not, I do not see it this as a disability. I see this as a different ability, क्योंकि इसमें काफी सारी strengths भी आपके बहुत होते हैं. Like for example, many can actually have different skills. Like for example, narrative skill set, जहाँ पे you can actually take 3 different objects and actually weave a story around it, which is a very difficult skill to have. Apart from that, how can you visualize 3D? So that is also something which really a lot of people with learning disabilities like dyslexia have it, where they can actually visualize things in 3D, which helps them to which can be used in many forms, like learning certain concepts, or architecture, or modeling. So a lot of those things can be used. So I would say it comes with its own strengths, and it is important for people living with all these learning disabilities and people who are supporting them understand कि कहाँ strengths है, कहाँ there are things which can be worked upon, but focus on the strengths, and the world will be a different place, I would say. ओके मैम. हम ये भी जानना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम ने आपके विकास में कितना योगदान दिया. So education system, see, हमारा education system is designed in a certain way. And जब मैं मतलब बड़ी हो रही थी तभी, I mean, there were at that point in time इतना उसमें awareness नहीं था कि जहाँ पे concessions वगैरह मिले. It was much later जब ये सारे introduce हुए थे. तो तभी it was just trial and error and figuring out कि क्या work करता है for that particular student, and just experiment with it.
The thing which really worked with me was my parents really supported and my teachers also supported. So all of them supported and everybody encouraged me to participate in multiple things. तो ये था कि in fact my father used to say like participate in everything, जीतो ना जीतो हर competition में participate करना है. So that gave me exposure to everything, like right from music, art, dance, languages and all of that. भले ही मतलब it was not something which बहुत ही अच्छा किया या बहुत ही गंदा किया, but it actually gave exposure and once you get exposure आपको फील होता है कि आपके पास लाइफ में चॉइसेस हैं. अगर आप मतलब एक चीज में अच्छे नहीं करोगे तो दूसरी चीज में कर सकते हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो दैट रियली हेल्प मी इन व्हाइल ग्रोइंग अप. ओके मैम, क्योंकि शिल्पा मैम हम सभी में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, अगर एक क्वालिटी नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी बहुत सारी और क्वालिटीज़ होती है जो हमारे नेचर को इन्हेंस करती है, हमारे जो पर्सनालिटी को इन्हेंस करती है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अरुण सर के लिए है. सर, at what age your SLD specific learning disability was identified and what was the initial reaction of your family, friends and the society? So as Shilpa told that at that time not every kid would be identified very early, but from her I have like 10 years younger, I think so. Sorry, but the point here is in school at that time the schools were aware of this problem, and the teacher actually told there is this something called dyslexia, and your child is having her difficulty in reading, writing, and you need to go do a screening, and you can avail exemptions for the exam and so on. That time when the teacher initially told, the two schools teachers did tell, but my parents didn't accept. And finally when it was board exams and still the same as special school told the same thing about my situation, then the parents accepted, and particularly my mother accepted in the first place, and she did get me the exemptions and so on, and that way I could complete my 10th. But my age was 13 years when I got identified. But today you can actually do it as early as first standard also. When the child is very early, intervention can be happening, and the early intervention is more easier for the child to adopt. Why? Because when the child is in the formative ages of learning a language itself, they can have good strategies to learn it rightly. And today there are a lot of online screening tools like DALI, like DLearners, or like Orchid's screening tool, and all these are all app forms too. So a child can be identified as early as first standard also today. Okay, sir. सेम क्वेश्चन शिल्पा मैम के लिए. मैम, किस एज में जाके आपको पता लगा कि आप स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपके आइडेंटिफाइड हुआ था, और आपकी फैमिली का, आपकी सोसाइटी का, जो आपके फ्रेंड्स थे, उनका क्या रिएक्शन था मैम, ये हम जानना चाहेंगे. श्योर. तो एज आई सेड कि बचपन में तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, ये बहुत बाद में हुआ था जब मैं मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग, एंड दैट आल्सो मतलब आई केम टू नो अबाउट इट. मैंने उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और तब मुझे मतलब डायग्नोस हुआ था. तो तब तक मतलब आई वाज एट एन एज वेयर इट डिड नॉट मैटर एट ऑल, क्योंकि मतलब सब पढ़ाई वगैरह हो गई थी और ये हुआ था, तो इट डिड नॉट मैटर. पर जब पता चला तो बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि दिस इज रियली ग्रेट. एंड मेरे बचपन के फ्रेंड्स भी मतलब बोल रहे थे कि अरे वी डिडंट नो, वी डिडंट नॉट रियलाइज कि क्या होता था कि बचपन में बिकॉज आई हैड टू काइंड ऑफ डील विद द सिचुएशन. मेरे को मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करती थी, और फिर मतलब खेल कूद में जरा कम और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान होता था. बट इट वाज नॉट कि मैं मतलब पढ़ाई बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के लिए करती थी, जस्ट टू काइंड ऑफ बी एट द लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मैं पढ़ाई करती थी. तो लोगों को लगता था कि अरे ये तो बहुत पढ़ाकू है, ये मतलब हमेशा बुक्स में रहती है. बट द पॉइंट वाज दैट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि ये क्या है. And it took me a lot of time to really figure out. So, it was a very different situation. And जब लोगों को पता चला, then it made sense kind of. Okay, thank you, ma'am. Next question मैं पूछना चाहूँगी अरुण सर से कि सर, what help was received from your school? So as I already told, the school
could give all the exemptions for a child when they have been identified as SLD today. You can get exemptions from second language, you can have a calculator for, in your maths exam, and you can also have a scribe, and you can have extra time. And all these is available, but it's only available for the parent who is more proactive to get such needed paperwork ready for the child, and make the school also adopt it. And today I think so it's prevalently known and available. But only one thing I would say is every school should actually have also has special educators, and if we can do early identification. That is, a proper assessment can be after 8 years, but early identification can be from first standard itself. If a teacher is saying that your child has reading writing difficulty, definitely the teacher would tell that if the parent is more proactive to identify such things in school itself, you can get a lot of help before your board exams and so on. But today near to board exams only, people go and get this certification and get this exemption and so on. That is more like a reactive measure. Today, the education system like NCERT is totally identifying kids in an early age also, using a lot of platforms today. So that services can also be availed by parents. सर अरुण सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. हमारे व्यूवर का आया है हमारे पास. उनका नाम है रितिका भट्ट. वो कह रही हैं कि उनकी नेफ्यू सफ़र कर रहे हैं SLD से और स्पीच प्रॉब्लम से, और वो स्टडीज़ करने में प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे. वो 8 ईयर के हैं, तो आपका क्या सजेशन है उनके लिए? शिल्पा, कैन यू आंसर द क्वेश्चन बिकॉज इट वाज इन हिंदी? श्योर. अभी वो 8 साल के वो डायग्नोस हुए हैं, तो दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम द स्पेशल एजुकेशन और एजुकेटर. एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि विच पेरेंट्स कैन रियली फोकस ऑन कि अगर डायग्नोस हुआ है तो इट डज नॉट मीन कि आपका जो बेटा है बेटी है डम है, या फिर वो कुछ लाइफ में नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता या पूरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है. ऐसी बात नहीं है. दिस इज समथिंग विद डिफरेंट टेक्निक्स, जो अरुण भी कह रहे हैं. DLearners इज वेरी गुड इन educating kids with different learning abilities to identify what those methodologies are based on which you can actually improve the learning capabilities. तो उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, एंड they are going to do really well in their life. थैंक यू मैम. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू अरुण सर. सर, एक और व्यूवर का क्वेश्चन आया है, मनीषा. शी इज आस्किंग दैट इफ द टीचर हैज आइडेंटिफाइड द डिसेबिलिटी बट द पेरेंट आर नॉट एक्सेप्टिंग इट and they are very aggressive, so they want to know, they want any suggestions from your side? Yes, so that is not that's a very common difficulty which every teacher would face when they want to kind of break this ice to the parent. But it was gone are the days they need to go to another center or another clinical setting when the child is young. If the child is first standard itself and the teacher is complaining of the child having such difficulties, today from their own houses, from their own phones, they can actually download apps called Dyslexia screening app, or else Orchids, or else DALI, or else DLearners, or any such app. They can actually take this not as a disability, but take it as a difficulty. If the teacher is wanting to break the ice to the parent, my tips is, I want any of our teachers who we train, we don't tell the parent that the child is having a disability, but you can actually tell that parent that your child having reading writing difficulty, and if you can identify the child early, you can actually get the right intervention done. So that way what you tell makes a lot of difference. So in the age of first standard and second standard, no one has actually defined the child has dyslexia itself. So why to tell them big terminologies? But rather than just boil down to an element wherein your child needs to read write well, and for that you need to have remedial measures and such things like that.
जैसे कि कोई सब्जेक्ट कभी समझ में नहीं आता तो आप बोलते कि एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, तो बस ऐसे इसको एक एक्स्ट्रा क्लास की तरह आप देख सकते हो, rather than वो उसको एक डिफिकल्टी या फिर एक बड़ा सा टर्म जैसे डिसलेक्सिया नाम दिया जाए है। तो वो आसान हो जाता है बहुत पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शिल्पा मैम के लिए। मैम क्योंकि आप काम करती है कंपनी में एल प्रोडक्ट TCS में, तो व्हाट इज़ द रोल टेक्नोलॉजी हैज़ played in dealing with the challenges due to SLD specific learning disabilities? हम ये जानना चाहेंगे मैम आपसे। Sure. So technology has, it essentially gives a very level playing field. जैसे for example spelling mistakes जो होती हैं वो usually with people with learning disabilities में होती हैं, और मैं भी अभी भी काफी सारी spelling mistakes करती हूँ, but then there are simple things like spell check kind of gets you in the level playing field. Also certain kind of fonts की क्या होता है कि कभी-कभी जो certain fonts होते हैं वो visually ठीक से नहीं दिखते, तो using different font types also can really help. See, when learning disability एक ऐसी चीज है जो आसानी से नजर नहीं आती, right? I mean, like what you can find out in other kind of disabilities कि different abilities की वो person ही मतलब आपको externally visually दिखता है, but in learning disability आपको पता नहीं चलता कि वो person में learning disability है नहीं है, तो it is very difficult for somebody to know कि क्या हो रहा है. So it is just important for somebody to just be kind कि कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, and technology plays a very अभी तो with the keyboards, with fonts, with spell check, all of that, it makes it very easy. To add on, there is also speak aloud, like you can actually select a text and that can hear to you, and so you can hear books. There was one time wherein I wanted to read those books and I was not able to, but today there is audio books, and you can actually scan the particular page and that will actually convert it to a text and that you can hear. So there are a lot of assistive device and tools available in basic any Android or iOS devices today. So the technology is definitely, as Shilpa told, it's created a level playing field to any child who's there. But it all begins with a parent or a teacher initiating it. Okay, sir, fine, sir. My next question is to you only, sir. Our viewer Prajapati has want to know that what is the difference between slow learner and learning disability? Yeah, so slow learner is not a SLD person. Slow learner is a person who walks slowly, talks slowly, thinks slowly. Everything they'll actually do slowly, and their brain functionality is slow. But the slow learner terminology is actually very overused in normal schools, like in regular schools. So dyslexia, SLD, specific learning disability, is not a slow learning person. They only have difficulty in reading, writing. The core academic skills of reading, writing and arithmetics is a challenge, but that does not make them a slow learner. So a person who walks, like basic, the functionality of the brain itself is slow. But for dyslexic or SLD children, the functionality of brain is not slow. As you see in flesh and blood, both of us sitting in front of you, we are no longer we are just not an expert in the panel. We are just a person with SLD and being there. And I don't think so we are doing anything slow in front of the camera today. Thank you, sir. Dear viewers and learners, we are going to open the quiz now, और थोड़े ही समय के बाद आप इस क्विज वाले लिंक पे क्लिक करके हमें अपने क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं, और किस तरह से जाना है उस लिंक तक वो हम सारी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले आप टाइप करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको एरो से दिख रहा है इवेंट पे आप आएंगे। इवेंट पे आप नीचे जाएंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन है लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम्स, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स। ये पेज आ रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड में सारे लाइव सेशंस मौजूद हैं। जितना भी लाइव सेशन हुए हैं अब तक उसकी सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल हैं। और राइट पोर्शन में आप देख सकते हैं एरो के ज़रिए
यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में सबसे नीचे जाएंगे क्विज पे एक लिंक फ्लैश हो रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको ये फॉर्म फिल करना है। आपको कैसे फिल करना है वो आपको गाइडलाइंस दे देते हैं। एक आईडी से एक ही एंट्री आप फिल कर सकते हैं और 30 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, आपको पूरे 30 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चंस करे और फिर आप वापस चले गए और आपको आंसर नहीं पता, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप अच्छे से समझ लें, फिर आप सारे क्वेश्चन एक बार में ही अटेम्प्ट करने हैं। आपको अटेम्प्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है और ये कब तक सबमिट करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसकी लास्ट डेट है 1 जुलाई 2022 मंडे। तो ये 1 जुलाई तक ओपन है और इसमें हम आपको बता दें जो भी स्कोर करेगा 70% एंड अबव, उसको CIET NCERT की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें इस ऑनलाइन सेशन में, इस क्विज में, और हमें उम्मीद है कि आप सभी ये सर्टिफिकेट लेने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को इस सेशन में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी मुख्य बातों पे हमने चर्चा की और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको बहुत सारे अपने लाइफ से रिलेटेड जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यदि डिटेक्ट हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, क्योंकि हम सभी परफेक्ट नहीं हैं और हमारा फोकस सिर्फ पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए, नेगेटिव साइड पे नहीं। यदि हम अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करेंगे, अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करेंगे, तो हम ज़रूर सक्सेस को अचीव करेंगे। तो मैं हमारे सभी दोनों एक्सपर्ट अरुण सर और शिल्पा मैम को थैंक्स कहूँगी। थैंक यू अरुण सर एंड थैंक यू शिल्पा मैम फॉर दिस नाइस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स, हमने आपको सभी को बताया आज के सेशन में हमारे ऑनलाइन क्विज़ के बारे में, जो हमारा 6 डे का ऑनलाइन वर्कशॉप था। आपको पता है कि हमारा ये जो 6 डे का ऑनलाइन वर्कशॉप चल रहा था, आज यानी 6th डे है, लास्ट डे है, और हमने आपको क्विज़ के बारे में भी बताया कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल को भी बताइए। और हमारे जो NCERT ऑफिशियल और यूट्यूब चैनल पे भी हमारे सारे जो टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स के सारे सेशन मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल। नमस्कार।